लोग कहते थे कि मुकेश खुद गा रहा है। हैंडपंप की रफ्तार धीमी हो गई, फिर अंकल कहीं छोड़ा। क्या दिन थे, हम गाया करते थे और वो भी गाया करती थी। सुन के सरसाची के कान खड़े हो गए। बस कुछ बढ़िया मसाला मिलने ही वाला था। सरसाची को बात उगलवाने की कला बखूबी मालूम थी। उसने पूछा, अंकल आपने कभी युगल गीत गाए थे? बहुत सारे। हमारे साथ एक युवती थी, अनुपम सुंदरी थी, उसके साथ हमने गाने गाए, बहुत सारे गाए। उसे मेरा मुझको इस रात की तन्हाई में आवाज न दो बहुत पसंद था। फिर से हैंडपंप पर उतना ही जोर, सालों का दर्द बस उस पर निकाला जा रहा था। सभी साथी को हाज कदमों खजाना मिल ही चुका था, पर उसे और आनंद उठाना था। अंकल एक बार सुनाइए ना। नन्नू बाबू ने हैंडपंप करना बंद किया और फिर लैम्प की लौ को देखने लगे। हल्की हल्की बूंदें अभी भी बरस रही थी। नन्नू बाबू आंगन में बैठे भीग रहे थे। फिर उन्होंने तान छेड़ी, मुझको इस रात की तन्हाई में आवाज न दो, आवाज न दो, आवाज न दो, जिसकी आवाज रुला दे मुझे वो साज न दो, आवाज न दो। नन्नू बाबू का गला अच्छा था, कितने सालों के बाद भी सदा हुआ था, बस बीच में हाफे लगते थे, लेकिन कोई भी सुर गलत नहीं होता था। सब साथी इतनी जल्दी किसी से प्रभावित नहीं होता था, पर वो भी मन ही मन बुढ़े की आवाज की तारीफ कर रहा था। अगली ही तान के साथ पूरा का पूरा स्थूलकाय शरीर हिलने लगा। रोशनी हो न सकी, दिल भी जलाया मैंने, तुझको भूला भी नहीं, लाख भुलाया मैंने। मैं परेशान हूँ, मुझे और परेशान न करो, आवाज न दो। बुढ़े की आवाज भर आ गई। फिर उसने कहा, वो हमें प्यार करती थी, पर वो ब्राह्मण थी, हम ठहरे कायस्थ। उसके घर वाले नहीं माने। हमने कहा था कि हम उसके बिना नहीं रह पाएंगे, पर वो नहीं मानी। हम उसकी शादी पर गए। यह कहकर बुढ़ा रुका और जमीन को देखने लगा। फिर जोर से बोला, हम गए उसकी शादी में, हमने शादी देखी और हमने कहा, जीते जी तुमको नहीं भूलेंगे। हमारे पास एक चाकू था। उसी शादी के मंडप में, हवन कुंड में, पूरे समाज के सामने अपनी कनिष्ठ उंगली काट के गिरा दी। यह कहकर बुढ़े ने अपना बाएं हाथ आगे किया। उसमें कनिष्ठ उंगली नहीं थी, बस एक डराता हुआ 4 उंगलियों का कुरूप हाथ। इस पर सरसाची को पहले तो बड़ी घृणा आई, फिर बुढ़े की प्रेम कहानी और बलिदान पर बहुत जल्दी हंसी आई। उसका गाना पहले की तरह चलता रहा, इस कदर जल्द किया मुझसे किनारा तुमने, कोई भटकेगा अकेले यह सोचा तुमने, छुप गए हो तुम मुझे याद भी आया न करो। इतने में गेट की कुंडी खटकी, सत्या आ गया था। नन्नू बाबू ने गाना बंद किया और चुपचाप हैंडपंप चलाना चालू किया। बाद में सरसाची ने सत्या को सारी बातें बताई। सत्या उंगली न होने वाली बात पर थोड़ा बुढ़े से डर गया था। फिर उसने कहा, अगर उस लड़की से अंकल की शादी हो जाती तो अंकल ऐसे नहीं होते। इस पर सरसाची ने कहा, बुढ़े को लड़की पसंद ही नहीं करती होगी, ये पक्का एक तरफा प्रेम है और अच्छा हुआ उसकी जिंदगी बर्बाद नहीं हुई। सत्या सोचने लगा, उस अनुपम सुंदरी की जिंदगी भले ही ना खराब हुई, पर आंटी की जिंदगी वो सच में बर्बाद हो गई। तो दोस्तों ये वानगी थी एक, और अब कविता। Thank you, Neeraj. I wanted to say something. आपने popularity की बात की, and मीनाक्षी mentioned बिहार की रस्म भाषा. I want to talk about something slightly different, and I want to specifically mention these things as possible sort of blind alleys, in a sense. So, at the beginning of the film Mughal Azam, what happens is that Salim returns home from not the absolute beginning. At the absolute beginning is Prithviraj Kapoor asking for his son. But when the action begins, Salim returns home from the battlefield. And once he's returned home from the battlefield, the story begins. Right? And similarly, people reading the news items that Neeraj was mentioning of these young men who go out and kill people, etc. They're wondering, that why does Salim behave in that way? Why do these people behave in this way? Where does this come from? What are they doing? Right? So the question is, there is a project. The project is to figure out how this masculinity gets made in this odd way. Why do adult men behave in this strange fashions that they behave in? Right? This is something that I think is extremely interesting, especially in India, because no one really talks about it. Right, and I would say that if you look at this book from that point of view, there's something to be gained. There's something to be gained from seeing how these young men socialize, how they learn their lessons. Right. The interesting thing about these people, like with Salim, is the Grihatyagi part. The part about having to leave home to learn how to be a man.
right? You leave home, and there is some experience out there in the world out there which is not home, but not your final destination either. And there's some lessons learned, right? And the socialization. The thing which struck me tremendously in this book is how each character sort of takes every incident, and the pleasure of that incident is actually contained in the retelling which will come later. See, वो फलाने वापस आएंगे तो उन्हें बताएंगे तो बहुत मजा आएगा, right? As he said, सब्यसाची को मसाला मिल गया. मसाला किस लिए? किसी और को बताने के लिए, right? And that's the beauty of it, the telling and the retelling, the socializing through telling of stories, and the process of creating some kind of collective value system in the transacting of these stories, right? There's some structure here which is, I think, extremely interesting. Right? This is a part of this. If you allow me a little flight of fancy, I hit on one end of the title, I want to hit on the other end also. Right? This ascetic life, right? The ascetic life in these lodges, which is even more ascetic a life than the life in a hostel in some engineering college, etc., or later when you're working somewhere far away. This ascetic life is Alpahar in the sense that it is a